नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के सेशन में हम जानेंगे एक फाइनेंस हेड, एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एक्सपोर्ट कंपनी में। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है मैनकाइंड ब्रांड्स सर्विंग लाइफ। सो दिस इज द कंपनी जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है, डेली लाइफ की मेडिसिन हो गई या हर प्रकार के प्रोडक्ट आपने देखा होगा। कई प्रकार की टेबलेट्स भी आती है, कई प्रोडक्ट्स भी आते हैं इसके मैनकाइंड ब्रांड्स के। सो यहाँ पे इस कंपनी में एक ऑफर है, जॉब रोल है जो कि एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड। ओके, सो यहाँ पे समझने की हमें यह कोशिश करनी है कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड होता है एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को हैंडल करेगा, मतलब कि जो भी पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटी होगी उसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है कि हमें इस सेशन के थ्रू ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड क्या क्या एक्टिविटी करता है जिससे कंपनी में फाइनेंस फंड रिलेटेड एक्टिविटी टाइमली परफॉर्म हो पाए। ओके, तो मेनली हमें समझना है कि जो एक्सपोर्ट होता है उसमें पेमेंट बाहर से आती है, क्योंकि हम गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट, ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी फॉरेन रेमिटेंस आ रहे हैं उनको एडजस्ट कराना बैंक के थ्रू, क्योंकि जो भी पेमेंट्स आती है वो बैंक की नज़र में ओपन पेमेंट होती है। बैंक को नहीं पता कि ये पेमेंट कहाँ किस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आई। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करा के शिपिंग बिल वाइज डेटा देके बैंक को उस पेमेंट को रिकंसाइल करना होता है। ठीक है, तो अब हम इस सेशन के थ्रू समझते हैं कि क्या एक्चुअली जॉब रोल है। इसके लिए हम समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। और एक्सपोर्ट होती है, ड्रॉबैक मिलता है हमें एक्सपोर्ट करने पर, रोटेव स्कीम मिलती है, लाइसेंस होते हैं जिनसे ड्यूटी फ्री होती है। ओके, तो कई सारे एक्टिविटीज होती है जिसमें फाइनेंस पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। तो ओवरऑल जो ओवरव्यू देख लेते हैं जॉब का। द एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड will be responsible for leading फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। सो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी के पास कितना पेमेंट आने वाला है। उसके बेस पे कंपनी प्लान करती है कि हमें कितना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, और कंपनी का जो अप्रेजल होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जो होती है उस पर काफ़ी फोकस करना होता है कि कितनी पेमेंट्स हमें आ रही हैं उसको बताना। इसके अलावा कितनी पेमेंट्स यूज हो रही है वो भी बताना, और क्या मार्जिन, क्या क्या बैलेंस है, ये सारी चीज़ें एक फाइनेंस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पर यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस हेड में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी उसमें ज़्यादा रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फाइनेंस स्ट्रेटजी की बात करें तो जो भी पेमेंट्स फॉरेन रेमिटेंस आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना, और जो भी इस रिलेटेड कंप्लायंस है गवर्नमेंट के, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना होता है, शिपिंग बिल और जो भी सेटअप डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना होता है, वो हमें कंप्लायंस फॉलो करना है। इसके अलावा ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द कंपनी इंटरनल बिजनेस। ओके, कंपनी का जो इंटरनल बिजनेस है उसका ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन करना। कंपनी में मल्टीपल एक्टिविटीज होती है जो कि पेमेंट रिलेटेड होती है। जैसे जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसके लिए रॉ मटेरियल्स हमने खरीदा है तो उसकी पेमेंट्स करना, ट्रांसपोर्टर की पेमेंट करना, सप्लायर की पेमेंट करना, और फ्रेट फॉरवर्डर्स की पेमेंट्स करना। तो ये सारी मल्टीपल एक्टिविटी होती है जिसे ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन कहते हैं, कंपनी का इंटरनल, जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा दिस रोल डिमांड स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज इन एक्सपोर्ट फाइनेंस। ओके, एक्सपोर्ट फाइनेंस में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, और आपको लग रहा है कि फॉरेन से पेमेंट नहीं आएगी तो आपको एलसी खुलवानी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हो उसके लिए अगर आप फंड नहीं है कंपनी के पास तो आपको गवर्नमेंट से, एग्जिम बैंक से पैसा भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट का जो रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है कि आप कोई भी शिपमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका टाइमली पेमेंट्स आ जाना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर फ्री में नहीं भेज सकते,
फ्री में सिर्फ सैंपल भेजा जाता है, जो टोटल आपका 3 साल में जो एक्सपोर्ट होता है उसका 2 या 3% आप सैंपल भेज सकते हो। इसके अलावा सारा आपको वैल्यू डिक्लेयर करना होता है और सारा आपको एक्सपोर्ट पेमेंट के अगेंस्ट करना होता है। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए इस पर्सन को। इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब आप गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बैंक में लगाने होते हैं फॉर द पेमेंट्स। ओके, सो कई तरह की पेमेंट टर्म्स होती हैं। एडवांस पेमेंट होती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होता है। तो ये सारी ट्रेड की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, एलसी का हो गया, बैंक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया पेमेंट के लिए, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए बात करें रेगुलेटरी कंप्लायंस जो भी है गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करना है। ठीक है, दिस incumbents will work with close with the internal team. ओके, सो ये जो फाइनेंस टीम, फाइनेंस हेड होगा, इसका क्लोजली वर्किंग किससे होगी? इंटरनल टीम जैसे एग्जिम से होगी, सप्लाई चेन मैनेजर से, रेगुलेटरी और ट्रेजर से होगी। ओके, सो ट्रेजरी क्या होगा? जहाँ पे पैसे रहते हैं वो उसका यूटिलाइजेशन करना। रेगुलेटरी जो भी रूल्स रेगुलेशंस आता है लीगल डिपार्टमेंट का, उसके अंदर करना है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भी मूवमेंट्स और ये यहाँ से प्रोडक्ट जो मूवमेंट कर रहा है आपका फैक्ट्री टू कस्टमर, उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इस फाइनेंस हेड का इन्वॉल्व होता है कि उसके लिए कितने फंड्स लगेंगे या फिर कितने फंड्स शिपमेंट के अगेंस्ट आएंगे। इस रिलेटेड एग्जिम जो कि एक्सपोर्ट, आपको पता है कि डेली वाइज पे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके रिलेटेड जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ड्रॉबैक कितना आ रहा है। तो सारी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व होना है। जो कि डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एग्जिम डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रेगुलेटरी एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट से इनको करना। ये इंटरनल आपके स्टेक होल्डर है। इसके अलावा बात करें तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इसमें बैंक आता है आपका। बैंक से फॉलोअप लेना, पेमेंट रिलेटेड जो भी बैंक ने आपसे क्वेरी मांगी उसका रिप्लाई करना। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट की पेमेंट आई है तो बैंक आपसे पूछेगा कि ये पेमेंट किस शिपमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। ट्रेड एजेंसी जो होती है उनसे फॉलोअप करना, उनसे जहाँ जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है ट्रेड एजेंसीज की, जो कि अगर आपका प्रोडक्ट अवेयरनेस में नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में, तो ट्रेड एजेंसी की हेल्प से करवाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट बॉडीज होती है आपकी, डीजीएफटी हो गई, कस्टम हो गया, ओके, सी आईसीडी टीकेडी बोर्ड हो गया, ये सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है इनसे एक्सटर्नल होल्डर से काफ़ी आपको वर्क करना है। इसके अलावा टू इंश्योर स्मूथ एक्सपोर्ट ऑपरेशन वाइल मैक्सिमाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, सो यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन कर पाए, इसके लिए मैक्सिमम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बतानी है आपको, जिससे टाइमली पेमेंट आना चाहिए। क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको फंड चाहिए, फ्रेट देने के लिए, सीएचए को पेमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की पेमेंट करने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो इसके लिए इस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने के लिए जो फाइनेंशियल फंड की ज़रूरत होती है, उसके लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आ रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करना और टाइमली रिसीव करवाना, फॉलोअप करना अगर टाइम लग रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंस एक्सपोर्ट फाइनेंस सेट को ध्यान में रखना है। इसके लिए एडिशनल रोल विल फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन। ओके, सो डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है आपका, डिजिटलाइजेशन जिसमें कई सारी एक्टिविटीज हो गई। आप एक्सपोर्ट करते हो तो डॉक्यूमेंट्स आपके सॉफ्ट कॉपी में वहाँ पे पहुँच जाते हैं बायर के पास। तो इस डिजिटल प्रोसेस के थ्रू पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट कैसे जा रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोसेस ऑटोमेशन आजकल के टाइम में सिस्टमेटिक में ऐसे लूप लग जाते हैं जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन इमिडिएटली आती है। जैसे जैसे ही बैंक के पास कोई पेमेंट आई, बैंक ऑटोमेटिकली एक ईमेल करता है कि ये पेमेंट रिसीव हुई है, इसके रिस्पेक्ट फिर डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। तो ये प्रोसेस ऑटोमेशन होता है जिसमें सिस्टम के अंदर ऐसे नोटिफिकेशन लगा दिए जाते हैं कि जो टाइमली आपको इंटीमेट करते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना है। इसके अलावा टैलेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, टैलेंट को डेवलप करना विद टीम, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ द टीम्स, अगर कोई इशू आ रहा है उसको समझना है। इसके अलावा बात करें अलाइनमेंट विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन एक्सपोर्ट फाइनेंस। ओके, सो यहाँ पे अलाइनमेंट्स करना है ग्लोबली। ओके, सो एक्सपोर्ट फाइनेंस की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अलाइन करना है, ठीक, कंपनी के लिए फंड रिलेटेड एक्टिविटी ही इसमें आती है।
इसके अलावा बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे जॉब आपका सीनियर मैनेजर हो भी मिल सकती है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, या डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस। आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे उसमें आपका वेलिडेशन एंड वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप किस चीज़ में एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे सीनियर मैनेजर भी बन सकते हैं आप, असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरव्यू एंड नॉलेज, जितना भी नॉलेज होगा उसके ऊपर, एक्सपीरियंस होगा उसके ऊपर यहाँ पे ये जॉब मिल सकती है। इसके अलावा बात करें डिपार्टमेंट फाइनेंस अकाउंट, तो क्वालिफिकेशन की जो जरूरत है वो है आपको एक सीए चाहिए विद एन एमबीए फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, वो नॉर्मल कॉलेज का नहीं माना जाएगा, एक रेपुटेड कॉलेज का एमबीए होना चाहिए सीए। ओके, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, इसके लिए प्रेफरेबली विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड भी होना चाहिए। तो टोटल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा 10 से 12 साल का, जिसमें 7 ईयर का जो स्पेशलाइज एक्सपीरियंस मांगा वो एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का मांगा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, तो ये वाली एक्टिविटी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेट विद द सीनियर मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट फाइनेंस टारगेट। ओके, तो यहाँ पे कोलैबोरेट करना है सीनियर मैनेजमेंट से, सीनियर मैनेजमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कितना प्रोडक्ट लगेगा, इसके अलावा सॉरी कितनी पेमेंट लगेगी, नेक्स्ट फोरकास्टिंग क्या है, फ्यूचर में कितने पेमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट से पूरा लिंक होता है, क्योंकि फंड रिलेटेड एक्टिविटी जहाँ भी आती है तो सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व आ जाता है, क्योंकि उनको इंटीमेट करना होता है कि कितने पैसे आएंगे कंपनी में, कितने यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ बताने के लिए सीनियर मैनेजमेंट से कोलैबोरेशन करना होता है। किस लिए? स्टेब्लिश फाइनेंस टारगेट, जो भी फाइनेंशियल टारगेट है कंपनी के उसको अचीव करने के लिए। इसके लिए एक्सिस न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड एवेल्यूएट बिजनेस वायबिलिटीज। ओके, जो बिजनेस की जितनी भी वायबिलिटीज है उसको इवेल्यूएट करना है। इसके अलावा नए मार्केट का एक्सिस हमें करना है। इसके अलावा बात करें लीड फाइनेंस फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लीड करना है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, सबसे फोरकास्टिंग हमें करनी होती है कि कितना फंड वीकली चाहिए, कितना फंड डेली चाहिए, कितना कितना फंड मंथली चाहिए। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी होती है, उसके रिगार्डिंग उतने पैसे का कलेक्शन भी आना जरूरी है। अगर कलेक्शन है ही नहीं और हम ये प्लानिंग करें तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा फॉरकास्टिंग हमें करनी है, फ्यूचर में कितने पेमेंट चाहिए, मंथ मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, ये कि कैसे कितने फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग हमें करनी है, जो कि रेवेन्यू को मैनेज किया जाए। इसके बाद रेवेन्यू प्रोजेक्शंस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, सो इंटरनेशनल मार्केट से कितना फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका प्रोजेक्शंस करना है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। उसके लिए मैं कितना पेमेंट लगाया था उसका, और जो पेमेंट आया उसका डिफरेंस निकाल के रेवेन्यू दिखाना है। तो प्रोजेक्शन करना है कि नेक्स्ट मंथ कितना आ सकता है, इसके अलावा अक्टूबर में कितना आ सकता है, नवंबर में कितना आ सकता है, दिसंबर में कितना आ सकता है, ये सारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है। इसके अलावा मैनेज फॉरेक्स एक्सपोजर। ओके, जो फॉरेक्स एक्सपोजर उसको मैनेज करना है, यहाँ पे करेंसी को हेजिंग करना है, जिसके थ्रू एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट से बचाया जा सके, लॉस को। आपने सुना होगा हेजिंग क्या होती है। हेजिंग होती है कि जो एक्सचेंज रेट की वजह से जो फॉरेन रेमिटेंस कंपनी को मिलते हैं उसमें जो शॉर्ट होता है, उसका मैं कहता हूँ, जैसे हमारे हमने एक्सपोर्ट किया $100, $100 का एक्सपोर्ट किया, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर एक्सचेंज रेट 88 का चला है तो 88,000 आएंगे $1,000 के लिए। ओके, और 100 के लिए 800, 8,800। ओके, सो यहाँ पे 8,000, यहाँ पे हम बात करें $1,000 की, तो $1,000 के एक्सपेक्ट में पेमेंट कितनी आएगी, अगर 88 का रेट है तो 80,800। अगर यही फ्लक्चुएट हो गया, रेट गिर गया तो क्या 85 रेट हो गया, तो कितने आएगी 85,500। सो ये डिफरेंस हो रहा है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है फाइनेंस में हेजिंग, जिसके थ्रू आप अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकते हो कुछ पीरियड के लिए, ठीक है, उसका चार्ज देना होता है। इसके अलावा अगर बात करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी टू सेफगार्ड मार्जिन। ओके, यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी हमें यूज करनी होगी जो मार्जिन है उसको सेव करने के लिए।
It's like create and maintain the details budget for the export operation, track performance and implement correct action where required. Okay, so track परफॉर्मेंस आपको डेली आपको करनी है, ट्रैक करनी है परफॉर्मेंस कंपनी की और इम्प्लीमेंट करना है करेक्शन एक्शन करेक्टिव एक्शन वेयर जहाँ पे भी जरूरत है करेक्टिव एक्शन लेना है। इसके अलावा कंडक्ट प्रोबेबिलिटीज एनालिसिस एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, न्यू कंट्री एंट्रीज एंड प्रोडक्ट एक्सपेंशन। ओके, जो नई कंट्री में बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट को एक्सपेंड कैसे किया जाए मल्टीप्लाई सारा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, बट इस वीडियो में हम इसको हिंदी में भी समझ इंग्लिश में भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के सब्सक्राइबर भी इसको वॉच करते हैं। सो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन, and today in this session we will understand the job role of the export finance head. The name company is Mankind Brand Serving Life. So multiple products this company manufactures. So for this company, the person required which is export finance head. Okay, so we know that in export finance, what are the working proceed in the company? Like a export, yes, the foreign remittance received from the overseas. So need to maintain the foreign remittance and reconcile when being asked the payment related documents. Okay, and also need to handle the drawback, rotative schemes. So incentive and all the things. The person needs good knowledge in the for this job post. Okay, because that he need to handle the very important activity. If you talk about the job overview, so here the person will responsible for leading financial strategy. Financial strategy means that to intimate to upper level that what what money is coming the next month and what will the budget for the for next month. Okay, and how financial compliance, whatever compliance we need to follow, and operational executions of the company's internal business. So whatever company's internal business like a for the manufacturing of the export product, we need to buy some local materials, raw materials from the local supplier. So here you need to operate and execution of this company's internal business, where fund will be distributed to the supplier and all the things. So here this role demand for the strong expertise in the export finance. Okay, export finance mean that when you exporting the goods, your payment may receive in the as per payment terms like 90 days from the bill of lading date. Okay, and 30 days from the bill of lading days. So these are the acceptance reasons. Okay, so what thing that first you need to invest the money, because you need to first you need to buy the product, you need to pay the payments, you need to hire the ch and freight forwarder, and you need to pay money and further for freight forwarding and other thing, packing, loading and all that. So here you are paying payments, but if your company not have fund, then you need to provide the finance. Okay, so this person have a good knowledge to providing the finance. Then forex management. Forex management, how much dollar you need to maintain for that shipping line and freight payment in the dollar and supplier payments. Okay, so forex management is very important in this part. Whatever forex you have available, you need to use for respected demand. Okay, not you can waste this dollar, but as per requirement. Okay, then internal trade documentations, international trade documentation. So what are the international trade documentation? Document which we need to submit in the bank for the payment is called international trade documentation, like a commercial news, packing list, bill of lading, certificate of origin, shipping bills, and insurance. These are documents. Then what the regulation compliance? So what are the bank regulatory compliance, like a payment received in the time from the overseas as per government given time. Okay, like a within 180 days. Yes, within 180 days, you need to you need to receive the money from overseas, because as per government we cannot export any product from India in a free. If you are
free example exporting, then this is the percentage is given on the previous 3 year export, like 2% of the last 3 year total export. You can 2% can export as a first sample. So this thing need to be keep in mind. Okay, here you have to work with closely with the internal team like EXIM department, import export department, supply chain management, and regulatory and treasury. So you need to deal with this internal stakeholder. Okay, so EXIM team will provide you the daily export from India, and supply chain also provide you the freight forward and other charges. Regulatory and treasury department are the same for the export. Finance department need to follow with that. Then other again external stakeholder. So the person need to be handle and coordinate with the external stakeholder like bank. So for the payment, you need to submit the document to the bank. Whatever notice received from the bank, you need to follow and reply that. And trade agencies, you need to contact with the trade agencies as per requirement. And government bodies like a custom, DGFT, and these are the bodies you have a good knowledge for that. So these are the external bodies, external stakeholder to ensure smooth export operational while maximum financial performance. Okay, so when you export and you need to manage this export operational, this internal and external stakeholder will help, not help, but these are involved in the whole process. So you need to deal with that. Okay, and for the smooth export operational for maximum financial performance, here your coordination must be strong for from this internal and internal stakeholder and external stakeholder. Additionally, the role will focus on digitalization. Okay, so you know that processes, multiple processes are now as per government is digitalized. Okay, so you need to follow the digitalized process, documentation and all the when you know that in this current time, shipping line ask the original document from the buyer to take delivery. Okay, so you know that multiple process will come in the market that this good will be delivered to the customer while making payments. Okay, okay, so digitalization process where you can send the sub document from the supplier side to release the goods. Okay, now process automations. So here you need to handle the process of automations like multiple activities of the export is going on the automations process. We receive the automations notifications from the system that what is your next activities. For example, you are importing goods from overseas, so supplier will dispatch the goods, but automation process when he dispatch the goods, when shipment is departure from the overseas office, the system will notify you, send a system mail that this shipment is moved from this country. So this is the automations because that on the behalf of this notification you can work. In the same way, the custom is also giving this digitalization process in which when any bill of entry is generated in the system on register email ID, this bill of entry will send. Okay, so this is the process of digitalization. You need to be aware with this process, digitalization and automations. Talent development and alignment with the global best practice in the export finance. Okay, so you are also with aligned with the best practice agencies or export finance. Okay, so these are the overview of the job role. Okay, this is only overview of the job role. If you talk about the job specification, so here the role is the senior manager, assistant general manager. This is depend on the interview performance, experience and knowledge. Okay, for example, here given mention is as per company the person is required for the export finance head, but this can be depend on the job role that what you will get like a senior manager or assistant general manager. Now, this department is the finance and account. Okay, in which this job post is given. Okay, then qualification CA required for that, which is the
with the MBA from reputed institute, prefer with a strong academic background. So here we can understand the companies require the person who is a chartered accountant and MBA from the reputed institute. And what total experience required for that? 10 to 12-year experience required for that. Okay, and 7 years specialize in the experience in finance export finance, and international trade finance. So total they require the 10 to 12, but 7 years export finance. Okay, now key deliverables. Okay, so first we will cover in this session, and the balance will cover in the next session. So this session is very important. Okay, so keep watch this session carefully. Everything is very important. Now he delivers the financial performance and forex management. So here the person who is going to be joined as an export finance head, he need to be manage the financial performance and forex management. So you need to collaborate with the senior management. Okay, senior management to establish export financial target and access new market opportunity and evaluate. Okay, so there are three activities mentioned here. Export financial target. So in under this export financial target, but how much we have to export in next month? Okay, in October, in September, October, December, January. So there is the set of you need to set the target for that with senior management with collaboration of the senior. Then access new market opportunities. Okay, for the business in the multiple countries, you need to contact the new market opportunity because that your product is like that. This demand is multiple countries. This is the daily product we can say. This is the basic product, medicines and all things. So you need to also search the market and evaluate business viabilities. Okay, whatever the business viabilities, you need to evaluate with the help of senior, with the collaborate with the senior management. Okay, now you need to lead financial planning, forecasting, and revenue projection for the international market. Okay, leading means that you are the main person to lead these activities. Financial planning, how much money will come and how much we need to spend as organizations. Like when you export, the payment receive as per the payment terms like 90 days, 60 days. But before that, you need to pay the vendors payment, supplier payment, and all things. So this this financial planning need to be lead and forecasting for the next upcoming month, like how much fund required for the September, October, November, like that. Okay. Then revenue projections. So you need to project the revenue for that. Okay, for the international market, how much payment may receive from the overseas. Then manage forex exposure. So here exposure need to manage currency hedging. You know, hedging is the process in which, due to the fluctuation of the exchange rate, currency exchange is the process due to the financial exchange rate. When you export any product from India to other country, when foreign remittance receive, this foreign remittance can be the short payment. Okay, short payment making a loss due to the exchange rate. For example, you are receiving from the $100 from overseas and exchange rate is 88, so you will receive the 88,000. Sorry, 88,000. Yes, but exchange rate is fluctuated, and this become the 85. So for this $100, you receive the 85,000 only. So it's a 3,000 loss due to the fluctuation of the exchange rate. So here you need to, you are as a financial head, you need to hedge this currency. Okay, hedging this currency, and by hedging this currency, you can save these fluctuations loss. Okay, then forward contract. You need to forward the contracts. Okay, and risk mitigation strategy.
Okay, so any risk is coming, then you need to mitigate and prepare the strategy for the margin of the safeguard. Okay, so this is come up for the company organization. Okay, now risk mitigation is a process in which company may face any risk in future. So you need to mitigate this risk by providing the strategy to safeguard the company's export margin. Then create and maintain the detailed budget for the export operation. Okay, so you need to create and maintain the detail for the budget for the export operation. Whatever export are monthly basis, like 20 container per day, 10 container per day, air shipment and all things. So what you need to maintain? You need to maintain the budget. Okay, how you need to maintain budget? When you exporting the product, the payment may receive as per the payment term, but at initially level you need the fund, okay, for the buying the raw materials, by the packing, for loading and transportation and CHL freight forwarding. So for that you require money, but you receive payment late. So this is the maintaining this budget for the export operation is very important for the job. You also need to be track the performance and implement the corrective action when required. Okay, for example, some month you receive payment in time, but in some time you not receive payment time. So the performance of the finance of organization is maybe differ as per payment receipt. Okay, so here you need to take the corrective action where it required. Or how you will take that? You need to take support from the banks for the finance. Then conduct profitability analysis of the export transactions. Okay, so you need to whatever the export transaction, whatever the payment received against the export, you need you need to conduct the profitabilities. Okay, how you need to conduct profitability means that as per the system in respect of the total how much payment you have spent on the buying this product as a raw materials. Okay, for example, you are manufacturing of the medicine. So for the manufacturing of this medicine, you need to import the raw materials. Okay, so how much you have spent on the raw material? How much you spend on that loading and packing, how much you spend on that custom clearance, transportation and freight forwarding. So you need to conduct the profitabilities and analysis the export transaction margin. Okay, and also you need to new countries entries need to be handled like if the your product is like a medicine and all the basic product. Okay, so this basic product need to be enter in the new market. Okay, so by entering this new product in the market, this product will be exported from India and foreigners. So awareness of this product also required, and how you can expand this product in the international market. This is also important. So as a finance manager, you need to handle these activities. So guys, in this session, we have tried to understand the first part of this export finance head who is responsible for the finance activities. Okay. So guys, we are just going to end this session here. Thanks for watching the session. Have a nice day.